हम in our state right now, in our country right now, हमारे देश में हम we have over how many 48 crore births in a year, and out of that 2.5 birth every year. Yeah, 2.5 crore children are born every year, and out of that 30%, nearly 23 to 25% are premature babies, are babies which are underweight, and we don't have an NICU hospital in India, in Bombay. Neither do we have a pediatric hospital, nor do we have the required number of beds that are necessary to save each and every one of these, children. Children are actually turned away from the hospital. NICU hospitals जो होते हैं, बच्चे जो होते हैं जो जल्दी पैदा होते हैं, they are underweight. They require specialized care, and हम कहते हैं कि हम आज इंडिपेंडेंस डे और हम कह रहे हैं कि हम बहुत आगे हैं और हम एज अ देश हम लोगों ने काफ़ी कुछ अचीव कर लिया है. बट आई थिंक वेयर चिल्ड्रन आर कंसर्न्ड, वेयर दी स्मॉल इश्यूज आर कंसर्न्ड, जैसे मेडिकल इश्यूज आर, आई थिंक दीज आर इश्यूज दैट नीड टू बी एड्रेस्ड, बिकॉज इट्स अ क्वेश्चन ऑफ अ चाइल्ड्स मोर्टेलिटी. एक छोटे बच्चे की मोर्टेलिटी की बात है. वेदर यू कैन सेव दैट चाइल्ड जस्ट एज फार एज, इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ मनी, इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ वेदर द डॉक्टर is available or not. It's just a question of whether there is a bed available or not for that child, and that specialized care that is required for it. So I think right now, according to what doctors told me, the statistics are that we require हमें 1000 बिस्तरों की ज़रूरत है NICU के लिए, and neonatal units जो मतलब that are required, or we have close to only 300. So there are 700 children that are dying on a minimum every time there is a child is taken to the hospital or something like that. So we need that. There is a need for it, and I would definitely suggest and encourage people, उनको बोलूँ कि ज़रूर जाइए, और I think that that is one of the causes that should be stood for, जिसके लिए हम खड़े हो सकते हैं और बोल सकते हैं, जिसके बारे में हम कुछ कर सकते हैं. अगर हम कुछ कर सकते हैं तो हमें ज़रूर करना चाहिए उसको.